a grape? Now you're coming. Now you want grape. Okay, you can have a grape. Not my finger. You want a grape? You want to come out? Alright, come out. So guys, so I want to show you guys how I make the soft food. तो ये bird soft food बनाने के लिए मैं use करती हूँ. Sometimes I use a little bit of vitamin D because you know they don't get enough sunlight, especially in the winter. So I'm gonna add a little bit of this, just one capsule. And I don't do this every day. ये कभी कभी हफ्ते में sometime एक बार या in 2 weeks I'll do it once. And then for breeding I also use this Necton E. You can get this from Amazon. And I'll just sprinkle a little bit. ये थोड़ा सा इसके ऊपर ऐसे डाल दें और फिर आप मिक्स कर लें या ऐसे ही छोड़. It's up to you. उसके अलावा मैं यूज़ करती हूँ I have this, ये हैंड फीडिंग फार्मूला है. थोड़ा बहुत मैं इसमें डाल देती हूँ just so they get a little bit more of the fiber and more protein. And I also use egg yolks. I use only egg yolks because my husband only eats the egg whites and I don't want to waste the egg yolks. So I'll just add a little bit of egg yolk. And then आप इसको mix कर लें. इसके अलावा अगर आप इसमें वेजिटेबल्स डालना चाहते हैं तो आप स्पिनच डाल लें, एक पूरा boiled egg डाल लें, carrots डाल लें. You can also boil the carrots and chop it up and put that in there. I'm just gonna keep this. And उसके अलावा मैं एक एप्पल काटूंगी, एप्पल के साथ few grapes and some almonds and walnuts I'll take separately because cockatiels don't really eat almonds and walnuts, so I don't really want to add all that stuff in there and let it go to waste. अच्छा, उसके अलावा ये मैं एप्पल ले रही हूँ. एप्पल को मैं चॉप करके, नॉट फाइनली चॉप्ड, इसके अंदर अलादा से डालूँगी. एंड एज वेल एज दैट मैं ग्रेप्स भी डालूँगी फॉर बिगर बर्ड्स मोस्टली. और फ्रूट्स वाला, फ्रूट्स इज़ समथिंग यू शुड गिव देम एवरी डे. रोज़ आप उनको थोड़ा सा फ्रूट दें, सेब दे दें, ग्रेप्स दे दें. कॉर्न, मेरे परिंदे बहुत शौक से कॉर्न खाते हैं. आई डू नॉट बॉयल द कॉर्न. मैं उनको कॉर्न, अफ्रीकन ग्रे को तो मैं कोशिश करती हूँ कि पूरे की पूरी उछली दे दूँ. और बाकी जो बर्ड्स हैं उनको मैं चॉप करके देती हूँ बिकॉज यू नो के बर्ड्स आल्सो वेस्ट अ लॉट ऑफ फूड इफ़ यू give them too much. Or another thing कि you make sure कि आप seeds निकाल लें because apple seeds are poisonous to everyone, but humans we can tolerate them more than birds. You know, we should not allow your bird to have any apple seeds. अच्छा, तो ये मैंने चॉप कर ली है. ये थोड़ी सी रहती है, इसको सीड्स को निकाल लें बीच में से. एंड मैं बस वॉश करके तो छिलका मैं इसको लगा रख देती हूँ, छिलका उसका. आई डोंट टेक द पील ऑफ. ठीक है, ये हो गया. फिर इसके अलावा थोड़े से ग्रेप्स लूँगी मैं. एंड आई एम नॉट गोना चॉप द ग्रेप्स, जस्ट ऐड अ लिटिल बिट ऑफ ग्रेप्स इन देयर inside with the fruit, some grapes. And with the grapes I can also add in here some nuts and seeds, whatever type of nuts you want to give them. Almond, walnuts, pumpkin seeds. Pumpkin seeds तो बहुत अच्छे हैं. Pumpkin seeds
अगर आप उनको दें तो इससे उनके अंदर जो कीड़े वगैरह हैं या कोई इन्फेक्शन वगैरह हैं इसके लिए बहुत अच्छा है. पम्पकिन सीड्स आर रियली गुड फॉर योर बर्ड्स. अच्छा, तो ये हो गए आमंड्स और ये थोड़े से वॉलनट्स हमने डाल दिए. Another thing I'm going to show you guys is bread. वैसे कहा जाता है कि too much bread is not really good for birds because you know there's baking soda in it. And I do agree with that, but I think just giving them a little bit of bread is really good for them. The cockatiels love bread. Quakers love bread. Ringnecks also like bread. So many African greys, they don't really like bread. The male will eat some bread. So once in a while, in a week, just I think a little bit of bread is okay to give them. I'm going to just add that here. तो ये हो गई हमारी diet for African greys. This is something if you're trying to breed the eggs and all that I showed you guys, it's very essential. Add some vegetables, spinach in there, carrots, whatever you can, however you can make it better. I don't have that right now, so I'm not adding it. तो ये हो गया उनका खाना for everyday breeding, as well as you know giving them seeds and stuff. सीड्स जो है वो भी थोड़े मॉडरेशन में देने चाहिए. मैं अपने बर्ड्स को पैलेट्स भी देती हूँ. And I also give them these are spray millets. I just buy it from my local pet store. Spray millets, these are really good for, they love it and it's actually good for them. So अगर आप चाहते हैं, अगर आपका bird soft food नहीं खा रहा, this is another hack. You take a spray millet, right? You take it and you just break it up and sprinkle it onto the soft food. And ये उनको encourage करेगा कि वो soft food खाना शुरू कर दें because birds love